Okay. Good morning, everybody. Welcome back to our lecture. So today we will be discussing our next topic, which is idioms and phrases. Okay. अब देखो idioms and phrases के साथ what is the thing? You will not get in the exam. You will not get all the idioms जो आपको पता है, ठीक है? There's a slight chance, एक हम consider करते हैं 40% chance हम consider करते हैं कि कुछ ऐसा होगा that we have read it earlier. Okay. Because many of the times now we have to see as per the sentences कि if the sentence, for example, कोई idiom हमारे पास given है, so we have to see कि if the sentence is making sense with that idiom meaning itself or not. And many of the times we are not even aware of the idioms we are doing, okay, or the one which are given in your examination. We are not even aware of those. So let's see. I'll count this part of idiom and phrases in one of the most trickiest part of our exams. Whether you take it as CGL, whether you take it as CHSL, it is one of the most trickiest part. Okay. Because यहाँ पे ना, even though you are very smart candidate or very one deserving, but still you will find some difficulty in solving such questions. Because ऐसा तो है नहीं, if you are so well versed with idioms and phrases that you have practiced them and you have read a lot number of times of idioms and phrases, then I can say that yeah, you'll be able to 40% say we can increase it to 60%, but still there will be some जिनका आंसर जो है वो आपको कोई आइडिया नहीं होगा, कोई गेस नहीं होगा. So before solving idiom and phrases, there are two things that we have to keep in mind. What are those two things? Okay, let's see what are those two things. पहले तो कि ये क्वेश्चंस आएंगे कैसे, पहले वो डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम ये स्टार्ट करेंगे. लेट्स सी कि अगर इडियम और फ्रेजेस आते हैं तो वो किस फॉर्म में आपको मिल सकते हैं. दो फ्रेज में आपको मिल सकते हैं, ठीक है, और आई मीन कि दो फॉर्म में आपको मिल सकते हैं, दो फेसेस में आपको मिल सकते हैं. फर्स्ट इज अ कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एंड अनदर वन इज द डायरेक्ट क्वेश्चन सीरीज जो आती है, ठीक है. अब डायरेक्ट क्वेश्चन सीरीज जो हम डिस्कस करेंगे एंड कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड आर व्हाट इन अ फॉर्म ऑफ कि कॉम्प्रिहेंशन के बीच में दे विल पुट सम इडियम्स. ओके, कॉम्प्रिहेंशन के बीच में दे विल पुट सम इडियम्स एंड अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, यू हैव टू solve those idioms. तो अगर एक पर्टिकुलर कॉम्प्रिहेंशन जैसे कि हमने देखा था वो yesterday the one we have solved, उसमें हमसे ना वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब पूछा था, ठीक है. तो या फिर हम वहां पे हमने आंसर कंपोनेंट था, ठीक है, उसका. वन ऑफ द थिंग इज कि ये जो कॉम्प्रिहेंशन जैसे वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब पूछा था ना, ऑन द वेरी सेम मैनर वो क्या करेंगे, ऐसे ही एक स्टेटमेंट के बीच में आपको एक एप्पल ऑफ माई आई जैसे करके डाल देंगे, जैसे कि ठीक है मेरी आंख का तारा है. अगर ये तो इट इज द वन विच इज वेरी सिंपल. अनदर वर्ड दे कैन राइट इट एज अ रॉड हॉग, ठीक है. आपको इस तरह के ऑप्शन में आपको दे देंगे एंड देन यू दे विल आस्क यू द अबव इडियम गिवन, the idiom rod hog given in the above paragraph, which of the following options are the exact meaning or are the literal meaning of those idioms. या फिर जो above phrases दिए हैं what that phrase means. इस तरह के क्वेश्चंस आप कॉम्प्रिहेंशन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड कॉम्प्रिहेंशन में पूछे भी गए हैं, नो डाउट. इस तरह के क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंशन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पूछे भी है. नेक्स्ट इज द डायरेक्ट क्वेश्चन. अब डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं ट्रिकीएस्ट. अब कॉम्प्रिहेंशन में आप एक टाइम पे क्या करोगे ना, यू हैव अ स्लाइट चांस कि इफ यू हैव अ हैंग ऑफ द कॉम्प्रिहेंशन कि उसका एसेंस क्या है, उसका क्रक्स क्या है, you know what that comprehension is talking about. So for a moment or so you will be able to solve it, ठीक है, कि अगर ये इस रोड एक्सीडेंट से बेसिस है या फिर अगर ये किसी और चीज से बेसिस है तो वो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है और उस बेसिस पे आप क्या करोगे, वो मीनिंग्स पुट करके बाय एलिमिनेशन यू कैन सॉल्व इट. अब देखो डायरेक्ट क्वेश्चन सीरीज में क्या होता है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन सीरीज में ना वो आपको स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस दे देंगे. अब स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस कैसे दे देंगे, जैसे कि आई विल टेक वन
the one which in practice I have, देखो यहाँ पे देखो, I have mentioned this practice test questions के अंदर, I couldn't keep track of everything he was saying. He talks a mile a minute. अब यहाँ पे तो उसने बता दिया कि यहाँ पे क्या है, I couldn't keep a track of everything he was saying. He talks a mile a minute. ठीक है, अब यहाँ पे a mile a minute क्या है हमारा, that is our idiomatic expression. अब जब ये हमारा idiomatic expression दिया है, अब यहाँ से हम थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं कि मुझे पता नहीं चलता है वो क्या बोलता है, अब वो कैसे बोलता है. अब यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं. ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं. अगर आपने पढ़ा होगा माइल अ मिनट का मतलब क्या है, ठीक है, देन ओनली यू विल बी एबल टू नो इसका आंसर क्या है. अगर आपने नहीं पढ़ा होगा कि माइल अ मिनट कहीं भी आपने आज तक देखा ही नहीं होगा, तो देयर आर वेरी हाई चांसेस ऑफ कि आप उसमें आराम से कंफ्यूज हो जाओगे. बिकॉज अल्टीमेटली द क्वेश्चन, ये इस तरह क्वेश्चन पुट करने का ऑब्जेक्टिव ही क्या है, टू क्रिएट कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ एस्पिरेंट्स. ओके, अब ग्रामेटिकल मिस्टेक सबसे ज्यादा, मतलब जो हमारा पोर्शन होता है ना इंग्लिश में, तो जो हमारा पोर्शन है सबसे ज्यादा मिस्टेक्स होने के जो चांसेस होते हैं वो इसी एरिया में होते हैं जहां पे वी आर अनअवेयर ऑफ थिंग्स. आप कितने इडियम्स पढ़ोगे, देयर आर मोर देन लाइक आई हैव देयर आर एन नंबर ऑफ इडियम्स. ओके, देयर आर एन नंबर ऑफ इडियम्स, आप कितने ही पढ़ोगे, यू डोंट हैव अ प्रॉपर काउंट ऑफ, और आप कितनों को रिमेम्बर करोगे. नेक्स्ट द थिंग इज दैट these are the kind of questions. देखो यहाँ पे रोड हॉग आई हैव टोल्ड यू. ठीक है, अगर आपने पता है आपको पता है कि व्हाट डज दिस रोड हॉग मींस ऑफ, आपका वोकैबुलरी एक्स्ट्रा अच्छा है, देन वी कैन से कि हाँ यू हैव द ग्रेट कैपेसिटी ऑफ सॉल्विंग दिस. अदरवाइज आई वोंट से कि you will be able to solve more than 40% of these questions. तो these are the direct questions जो one liners होते हैं. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है ना, the question state in the following question an idiomatic expression or proverb is highlighted. एक idiomatic expression और proverb को highlight किया हुआ है. You have to select the alternative which best describe its use in the sentence. आपको वो alternative choose करना है जो best describe करता है उसका use. अब यहाँ पे सेंटेंस में आपको दे देगा, सेंटेंस में आपको उसको यूज डिस्क्राइब करना है. बट व्हाट इफ द क्वेश्चंस कम कि यहाँ पे एक इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है, यू हैव टू सिलेक्ट द मीनिंग, व्हाट डज दैट इडियोमैटिक एक्सप्रेशन मीन, फिर आप कैसे करोगे. सो दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट क्वेश्चंस. डायरेक्ट क्वेश्चन सीरीज जो आपके पास होगी ना, इट विल बी अराउंड 10 क्वेश्चंस. एक स्ट्रेट लाइन में आपको 10-12 क्वेश्चन होंगे. मिनिमम तो आप 5 से 6 एक्सपेक्ट करके चलो. 5 to 6 इज ऑल टाइम फेवरेट, वो तो आना ही है. 5 to 6 आर कमिंग. बट अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ पेपर इज टफ, यू कैन एक्सपेक्ट मोर. ओके, सो दैट इज ऑल डायरेक्ट क्वेश्चन सीरीज. कॉम्प्रिहेंशन आई हैव टोल्ड यू, जो हम कॉम्प्रिहेंशन डिस्कस करते हैं उसमें बीच में एक इडियोमैटिक फ्रेज डाल देंगे. ठीक है, एक्सप्रेशन डाल देंगे, यू हैव टू सेलेक्ट अकॉर्डिंगली. कॉम्प्रिहेंशन में चांसेस ये हैं, इफ यू नो द क्रक्स ऑफ दैट कॉम्प्रिहेंशन, यू आर वेल अवेयर व्हाट दैट कॉम्प्रिहेंशन इज टॉकिंग अबाउट, सो फॉर अ मोमेंट और सो वी कैन कंसिडर दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व इट. बट व्हेन इट कम्स टू डायरेक्ट क्वेश्चन सीरीज, वन वर्ड में आप कहाँ से कर लोगे. ठीक है, या फिर एक पर्टिकुलर छोटा सा सेंटेंस है, आप उसको कैसे सॉल्व कर लोगे. ओके, दैट इज वेयर यू गेट लाइक यू कैन expect the trickiest part is this one. Okay, you can expect the trickiest question in this part, and then at that moment of time the very first thing you have to do is, अगर इस टाइम पे जब डायरेक्ट क्वेश्चन सीरीज में आए, वन लाइनर्स में आ जाए, आता है करो, नहीं आता है छोड़ दो. डोंट गो फॉर नेगेटिव्स. आता है तो उसको करना. इफ यू फील लाइक कि हाँ कि मैंने ये कहीं पे पढ़ा है, ठीक है, आई हैव सीन इट, आई हैव रेड इट इन द न्यूज़पेपर या समवेयर एनीवेयर, आई हैव जस्ट सीन इट, तो यू कैन टेक अ स्लाइट चांस. बट सम आर बाउंसर्स, एज आई हैव टोल्ड यू, डायरेक्ट में देयर आर सम आर लिटरल बाउंसर्स. So if you feel like कि यार I have never read it, I don't know the meaning, better leave that question, focus on the next part, because ऐसे कुछ नहीं होगा अगर वो incorrect होगा, and then कुछ नहीं होगा, आपका क्या होगा, straight away negative marking and you lost your marks. So better इस type के questions को आप करो, तब करो when you have a proper hang of it. So let's start discuss करते हैं कि ये जो 40% achievement है हम इसमें कैसे ले सकते हैं. Let's start. One more thing you have to do, जितने भी previous year questions हैं, जैसे कि the one we will be solving over here in today's lecture, and the next thing is जितने भी previous year form में ये direct series के questions हैं, PYP. Okay, जितने भी ये PYP form में previous year form में direct series के questions हैं, just learn them.
मतलब एक टाइप से होता है ना, उसको इतने बार अच्छे से पढ़ लो, इतने अच्छे से याद कर लो कि when it comes to exam, क्योंकि most of the times it happens ना, they come to exam, ठीक है, रिपीट हो जाते हैं, तो वहां से आप एक दो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, वही एक 10-20% का, ठीक है। 10 क्वेश्चन में से आप अगर 4 कर लेते हो सही, एंड आई काउंट इट एज अ गुड स्कोर इनके कंपेयर, इस क्वेश्चन idioms के कंपैरेटिवली आई एम टॉकिंग अबाउट। सो लेट्स सी what is an idiom. So as I've told you, an idiom is an expression that doesn't exactly mean what the word says. देखो पहले यहाँ पे मैंने डेफिनेशन में सीधा सीधा लिखा है कि क्या है, कि एक्सप्रेशन है जो क्या नहीं बताता कि वो जो वर्ड्स है उनका एग्जैक्टली मीन्स क्या है। अब देखो, शी स्पिल्ड द बीन्स, ठीक है, अब शी स्पिल्ड द बीन्स का मतलब है कि शी टॉक टू मच एंड टोल्ड द सीक्रेट, ठीक है, शी स्पिल्ड द बीन्स। बट अगर हम इसको लिटरल मीनिंग में लेके जाए ना इस सेंटेंस का, शी स्पिल्ड द बीन्स, इट डजंट मीन कि उसने बीन्स गिरा दी, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है, इट मीन्स कि उसने जो सीक्रेट था वो सबको बता दिया है। अब इन दोनों स्टेटमेंट में यू विल फील लाइक मैम देयर इज नो सच लिंक ऑफ दिस, बट अब देखो लिंक तो है नहीं ना, बट वी हैव टू नो कि ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन इसकी डेफिनेशन ही क्या है कि एग्जैक्ट मीनिंग जो है वर्ड का उससे मैच ही नहीं है, इट इजंट द एग्जैक्ट मीनिंग, जो भी ये वर्ड बोल रहे हैं उनका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं, इट्स जस्ट एन एक्सप्रेशन टू टेल समथिंग, ओके। व्हाट इज एन इडियम? इट इज एन एक्सप्रेशन दैट डजंट एग्जैक्टली मीन व्हाट द वर्ड से, वो एग्जैक्टली क्या मीन नहीं करता है कि वर्ड क्या बोल रहा है, ओके। अब उसी तरह से हम देखते हैं फ्रेजेस, बिकॉज हमारी हेडिंग क्या है, इट इज इडियम्स एंड फ्रेजेस। अब देखो फ्रेज में क्या है ना, इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट अ सब्जेक्ट एंड वर्ब, जहां पे सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होगा, दैट फंक्शंस इन अ सेंटेंस एज वन पार्ट ऑफ स्पीच। और कैसे फंक्शन करता है वो किसी भी सेंटेंस में, कि उस पार्ट ऑफ स्पीच का सिर्फ एक पार्ट ऑफ स्पीच की फॉर्म में फंक्शन करता है। जैसे कि ही इज लाफिंग एट अ जोकर, शी इज मेकिंग टी फॉर हर गेस्ट। अब देखो हम इसको अगर थोड़ा सा और डिटेल में समझे तो यहाँ पे दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। जो ग्रामेटिकल टर्म है ना फ्रेज, वो हम किसी भी चीज के लिए यूज करते हैं जहां पे हमें क्या है, किसी भी एक्सप्रेशन को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ग्रामेटिकल टर्म फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड जो किसको यूज करते हैं, यूज टू डिफाइन एन एक्सप्रेशन, वेयर एज ईडियम इज इटसेल्फ एन एक्सप्रेशन। जब हम बात करते हैं say them together कि हाँ you have to learn idioms and phrase, we will be doing idioms and phrase, but what is the difference between them? अब जो idioms है ना, they are itself a expression, पर जो phrase है they are used to define an expression, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो लिटरल मीनिंग से डिफरेंट है, लिटरल मीनिंग से उस फ्रेज की या फिर उस सेइंग की लिटरल मीनिंग से अलग है, हम उसको इडियम में क्लासिफाई करेंगे। एज आई हैव टोल्ड यू, इडियम की डेफिनेशन ही वो है कि जो उसका मीनिंग है, जो स्टेटमेंट का मीनिंग है उसको उससे कोई लेना देना ही नहीं है, इट्स जस्ट अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, ओके। अब देखो यहाँ पे है हमारे पास दैट फ्रेज इज ऑलवेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट अ सिंगल वर्ड कैन ऑन ओकेजन्स बी एन इडियम। अब फ्रेज में हम क्या है, वी कैन यूज मल्टीपल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं हमारे पास, बट अ सिंगल वर्ड कैन ऑन ओकेजन्स बी एन इडियम। एक सिंगल वर्ड है वो ओकेजन्स में, मतलब कभी कभी हम उसको एज अ फॉर्म ऑफ इडियम एंड एज पर द ओकेजन कि हम उसे कहाँ यूज कर रहे हैं, इट कैन एक्ट एज अ इडियम, कैन एक्ट एज अ इडियम, ओके। नाउ फॉर एग्जांपल सी, जैसे कि यहाँ पे है दिस इज मून लाइटिंग। अब मून लाइटिंग का मतलब क्या है, इसका कोई लेना देना नहीं है मून से या उसकी लाइट से, it has nothing to do with what, with moon and light. The only thing it has to do with is, अब देखो इसका मीनिंग एग्जैक्ट क्या है वो देखते हैं। सिंगल वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है, समथिंग डिफरेंट, मतलब क्या है इसका, समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग, ठीक है। अब हम इसको अलग अलग तरह से यूज कर सकते हैं, अलग अलग फॉर्म में यूज कर सकते हैं। वी नो दैट इट्स अ सिंगल वर्ड जिसका मीनिंग है समथिंग डिफरेंट, इन द वे इट इज यूज्ड, ठीक है। इट डज नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद द मून एंड लाइट, ठीक है। मून लाइट के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, पर इसमें क्या है, मून लाइटिंग है, तो हमको पहले सुन के क्या पता चलता है कि दैट मून इज लाइटिंग, ठीक है। बट इट इज इन द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, द मीनिंग इज व्हाट, इट इज समथिंग डिफरेंट। तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि एक सिंगल वर्ड को हम एज इन ऑन ओकेजन्स, ठीक है, वी कैन बी यूजिंग इट एज इडियम। अब नेक्स्ट सी,
it says that phrase has literal meaning. एक phrase का क्या है? It has a literal meaning, while an idiom is a figurative expression giving meaning to a phrase and conversion. Phrase का एक literal meaning है और idiom क्या है? Idiom है एक expression है जो उस phrase को और further क्या करता है? इंटेंसिफाई कर देता है, उसे कॉन्वर्सेशन को या उसको एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन दे देता है. ठीक है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट, द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड idioms. Even though we use them together, but still they have different meanings and they have different forms. Let's see. Our next is, there are 4 types of phrase जो हम consider करते हैं. Why I haven't classified idioms? There is a reason for that. Why I haven't classified idioms? The reason for the same is, if I classify idioms, you will be so confused कि वो आपके exam point of view से it isn't necessary. Because what we are preparing the basic grammar over here. Now, you have to know just the concept, okay, and the basic forms. जैसे कल हमने पूछ लिया था उस examination, we are solving the examination paper. उसमें पूछा था कि an is what, a is what, it's a indefinite article, definite article, relative pronoun. ठीक है, ये 4 options आपको दे दिए थे. So what, that's why I say कि जो classification है वो necessary है, पर classification की further classification isn't necessary. अगर आपको इसमें वहां पे मास्टर्स थोड़ी ना करना है. ओके. अब नेक्स्ट देखो, 4 टाइप्स ऑफ फ्रेजेस. अब हम जो अपने फ्रेजेस है ना उनको भी 4 पर्टिकुलर टाइप में क्लासिफाई करेंगे. 4 पर्टिकुलर टाइप में पहले हमारे पास आएगा नाउन फ्रेज, नेक्स्ट थिंग इज वर्ब फ्रेज, नेक्स्ट इज एडजेक्टिव एंड द लास्ट वन इज preposition. So you can remember it by NVAP. It is noun, verb, adjective and last is preposition. Now let's see noun phrase क्या बोलता है. Noun phrase includes a person, place or thing. Noun phrase क्या include करता है हमारा? A person, place or thing in the small group of words. एक small group of words में क्या क्या include करता है? Person, place and thing. जैसे कि देखो यहाँ पे है Katie lives in the blue house. Katie कहाँ रहती है? Blue house में. अब यहाँ पे the blue house जो है ना, this is what? This is the noun phrase. सिमिलरली अगर हम वर्ब फ्रेज की बात करें, अब वर्ब फ्रेज में क्या होगा? वर्ब की बात हो रही है तो फर्स्ट उसके अंदर वर्ब इंक्लूड होगा. ठीक है. अ पोर्शन ऑफ सेंटेंस एज वेल एज अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. सेंटेंस के साथ एक और हमारे पास क्या होगा? एक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इट कैन बी द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस. तो सेंटेंस का प्रेडिकेट भी हो सकता है. अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है द बिग शिप सेल्ड अक्रॉस द ओशियन. अब ये जो सेल्ड अक्रॉस द ओशियन है ना, व्हाट इज इट? This will be our verb phrase. Okay, this is what? This is our verb phrase. अब देखो adjective में क्या है हमारे पास, जो describe करते हैं हमारे noun को. We know adjectives are those. अब adjectives कैसे हैं? यहाँ पे देखो the boy is clever. The boy took his clever, sorry यहाँ पे देखो the boy took his clever bouncy dog rover for a walk. ठीक है. अब यहाँ पे describe क्या कर रहा है rover को? यहाँ पे रोवर को डिस्क्राइब कर रहा है क्लेवर एंड बाउंसी. तो यहाँ पे हिज क्लेवर बाउंसी डॉग इज व्हाट? इज आवर एडजेक्टिवल फ्रेज. ओके, ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है. क्या क्या है नाउन फ्रेज के अंदर? हमने क्या पढ़ा? नाउन फ्रेज में हमेशा एक नेम, प्लेस या थिंग होगी. ठीक है. एक स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ. जैसे कि यहाँ पे केटी है, केटी की बात ही हो रही थी. ठीक है. वो कहाँ रह रही है? इन अ ब्लू हाउस. तो ब्लू हाउस इज एडिशनल थिंग. तो यहाँ पे ब्लू हाउस हमारा क्या है? ये हमारा नाउन फ्रेज में काउंट कर लेंगे हम. नेक्स्ट अगर हम वर्ब फ्रेज की बात करें, वर्ब फ्रेज में क्या इंक्लूड कर रहे हैं? हम वर्ब इंक्लूड कर रहे हैं. तो यहाँ पे जो भी हमारा स्टेटमेंट है ना, उसको हम किससे लिंक करेंगे? वहां पे एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा. जैसे यहाँ पे बिग शिप है, सेल्ड अक्रॉस द ओशन. तो ये जो सेल्ड अक्रॉस द ओशन है, ये हमारा वर्ब फ्रेज है. अब नेक्स्ट देखो एडजेक्टिव फ्रेज. एडजेक्टिव फ्रेज को हम किस लिए यूज करते हैं? वी यूज इट टू डिस्क्राइब द नाउन. व्हाई वी यूज इट? वी यूज इट टू डिस्क्राइब द नाउन. अब जहां पे भी हमारे स्टेटमेंट में है, जैसे कि द बॉय टुक हिज व्हाट? क्लेवर बाउंसी डॉग रोवर फॉर अ वॉक इन द पार्क. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा एडजेक्टिव फ्रेज क्या बनेगा? क्लेवर, बाउंसी, कौन? डॉग. ठीक है. तो इट इज क्लेवर बाउंसी डॉग. तो ये हमारा क्या है? दिस इज आवर एडजेक्टिव फ्रेज.
अब लेट्स सी प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है। वो फ्रेज जो प्रेपोजिशंस के बाद, स्ट्रेट अवे प्रेपोजिशंस के बाद यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो, द बुक ऑन द टेबल इन द क्लासरूम बिलोंग्स टू बाबरा। तो बुक कहाँ पे, ऑन द टेबल इन द क्लासरूम, बिलोंग्स टू व्हाट, बिलोंग्स टू बारबरा। तो ऑन द टेबल क्या है हमारे पास, ऑन द टेबल इज अ preposition, इन द क्लासरूम बिलोंग्स टू बाबरा। तो यहाँ पे ऑन द टेबल इन द क्लासरूम, तो ये हमारा क्या है, दिस इज आर prepositional phrase। जैसे यहाँ पे लिखा है दे आर सेट राइट आफ्टर द preposition। अब preposition phrase show the relationship between object and the other word। अब ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, बुक ऑन द टेबल, और बाकी सेंटेंस का वर्ड क्या है, क्लासरूम। कहाँ रखी है वो बुक, ऑन द टेबल इन द क्लासरूम। तो टेबल कहाँ पे, वो क्लासरूम के अंदर है ना। Let me just erase it so that it will be more clear। हाँ, तो यहाँ पे जो हमारा टेबल है वो कहाँ पे है, क्लासरूम में है। तो एज पर द prepositional phrase says these are set right after the preposition। preposition के बाद में है, वो क्या शो करता है, रिलेशनशिप शो करता है, किसके बीच में, ऑब्जेक्ट के और अनदर वर्ड जो भी सेंटेंस में हमारा गिवन है। अनदर वर्ड क्या गिवन है हमारा सेंटेंस के अंदर, the another word which is given is क्लास में टेबल एंड क्लासरूम, ठीक है। बुक की कहाँ पे है, टेबल पे, और टेबल का
Okay, just give me a minute. Let me just fix the slide for you. Okay. क्या तो हम कहाँ पे थे? We were at prepositional phrases. So as I have told you कि यहाँ पे जो हमारे prepositional phrases हैं, what they are said right after the prepositions. अच्छा, why we have discussed these four kind of phrases? Because as we talked yesterday ना, वो हमारे पास indefinite article आ गया था. Same is the reason why I'm talking about these. ठीक है? Prepositional phrases, sorry, noun phrases या verb phrases जो हैं, we can get these. ठीक है, हमारे पास एक statement होगा and we have to, you will be given the above statement have prepositional phrase, verb phrase और noun phrase in it. This will be the question. Adjective phrase. तो अगर वो किसी चीज को define कर रहा है, किसी चीज के बारे में information आपको provide कर रहा है, describe कर रहा है हमारे noun को कि noun कैसा है हमारा, या फिर अगर वो हमें बता रहा है verb है उसके अंदर या उसके अंदर noun की बात हो रही है, then उस basis पे हम उसको classify करेंगे. ठीक है? I hope this is clear. Now let's learn some idioms. Okay. See these idioms which I have mentioned over here. These are some of the idioms जो पहले exams में पूछे गए. Whether it is in your defense examinations, whether it is in your SSC examinations or IBPS. These are the ones which have been which they have asked. Okay. So better if you guys write them down. Consider them as a kind of previous year practice itself. So let's learn some of those. अब देखो इसी तरह से आपको दिया जाएगा, जैसे कि फर्स्ट इज एसिड टेस्ट. अब एसिड टेस्ट क्या प्रूव करता है? अब यहाँ पे एसिड, आई हैव रिटन द मीनिंग ओवर देयर, सो यू कैन पुट देम इन रिस्पेक्टिव सेंटेंसेस. सो वन थिंग यू विल डू, you will just let me know any two of your choice. You will make a sentence by using them and you will post it down in our comment section. Okay, and I'll go through the same. So let's do with this. Let's start with this acid test. अब यहाँ भी दिया है acid test. So what acid test they can give? वो ऐसे acid test दे देंगे आपको, ठीक है, फिर आपको comprehension में और direct दे देंगे, and they'll ask what is the meaning of this idiomatic expression. Okay. Below are the meanings of some of the idiom. Below are given some idiomatic expressions. Kindly match the correct meaning. ठीक है, इस फॉर्म में भी आ जाएगा, मैच फॉर्म में भी आ सकता है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उस फॉर्म में भी. अब यहाँ पे देखो, एसिड टेस्ट प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ समथिंग. क्या प्रूव करता है? इफेक्टिवनेस प्रूव करता है किसी भी चीज की. अब नेक्स्ट इज कट द ग्राउंड फ्रॉम अंडर फीट. व्हाट इज सेज? कट द ग्राउंड फ्रॉम अंडर फीट. अब इसका मतलब क्या है? When you cut the ground from someone's feet, you do something which weakens their position. It means कि अगर आप किसी का cut the ground under feet एक्सप्रेशन यूज करते हो, इसका मतलब ये है कि आप कुछ ऐसा करते हो जो किसी इंसान की पोजीशन को क्या करता है? It weak their position. Okay. Next is chase your tail. Spending a lot of time and energy doing a lot of things but achieving too little. This is what most of us do. We chase our tail. Okay. We spend a lot of time and energy doing a lot of things, but actually we are achieving too little. We are not achieving to our maximum potential. जितना हमें करना चाहिए. So that is what it is. Chase your tail. ये most of the aspirants की life में बहुत common सी चीज है. We spend a lot of time, lot of energy in doing and revising and everything, but because our strategy is wrong somehow and our way is wrong, so we achieve too little. Next is a whole bag of tricks. It means trying all the clever means to achieve something. It means कि आप कितने भी clever means, कितने भी अलग अलग तरह के आप तरीके लगा लो किसी पर्टिकुलर चीज को अचीव करने के लिए, कितने भी तेज बन लो, ठीक है, कितने भी स्मार्ट बन लो किसी पर्टिकुलर चीज को अचीव करने के लिए. तो chase your tail and whole bag of tricks को आप लिंक कर सकते हो. chase your tail का मतलब क्या है? कि आप बहुत सारा टाइम लगा रहे हो कुछ अचीव करने के लिए, और होल बैग ऑफ ट्रिक्स का मतलब क्या है? आप बहुत क्लेवरली ट्राई कर रहे हो कुछ अचीव करने के लिए. नेक्स्ट इज गेट डक्स इन अ रो. गेट डक्स इन अ रो का मतलब क्या है? गेटिंग योर थिंग्स वेल ऑर्गेनाइज्ड.
ये भी आप अपने आप से ही लिंक कर सकते हो. इफ योर बुक शेल्फ इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड और योर रूम इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड, इट सेज ना, एक बोलते हैं कि if you have a neat and tidy place, your mind is very clear about a lot of things. So if you are not organized, if you don't get all your ducks in a row, if you're not well organized, then what? If you're not well organized, you won't be able, like, you won't have a lot of clarity. You'll be stuck in a place or so. Okay, next, get the shoe on a road. Get the shoe on the road का मतलब है putting up a plan or idea into action. You have a plan, put it up into action. Because yesterday I was reading a book. It says there are ways of procrastination. It has 21 ways of procrastination. So it is Eat That Frog. उसमें यही सेम चीज mentioned है कि whenever you have a plan, you have to write those down. Because when we write anything down, what happens कि हम उसको एक physical form दे रहे हैं. We are seeing it. अगर हम किसी चीज को देख रहे हैं या फिर उसको रख रहे हैं, तो वो क्या है, उसका एक physical form exist करता है. तो it helps us a lot in achieving our goals. So whenever you have any kind of idea, so get the show on the road. Just put the plan into action. Okay. Next is keep your fingers on the pulse. Keep your fingers on the pulse का मतलब क्या है? Being constantly aware of the most recent developments. Link these with your current affairs questions. Okay, we are having current affairs series every day. So when we see keep your fingers on the rules का मतलब क्या है? Being constantly aware of the most recent developments. Most recent जो भी आपके developments हो रहे हैं, तो recent developments से आप keep your fingers on the pulse को याद रख सकते हो. Next is mean business. Being serious about what you announce. Okay, अब आप कुछ बोल दो. For example, you say something and the next thing you do is you don't follow it. Okay, then that is what? That is not a mean business. Mean business is when you say something, achieve it, do it. Next is think on your feet. Think on your feet का मतलब क्या है? Adjusting quickly to changes and making fast decisions. Think on your feet का मतलब है when we adjust quickly to what? To changes and we make what? We make fast decisions. That is think on your feet. Next is sail through something. Sail through something में हम क्या लिखेंगे? Being successful in doing something without difficulty. So when we say that that person sailed through something, it means कि उसने वो एक particular चीज को successfully achieve कर लिया बिना किसी difficulty के. Okay. But as I see कि हमारे examinations में difficulty is a part of process. Next, tricks of trade. Tricks of trade का मतलब क्या है? Clever or expert way of doing something. अब यही same चीज हमने भी पीछे पढ़ा था. Clever or expert way of doing something. ठीक है. अब देखो, a whole bag of tricks. Clever means to achieve something. Tricks of trade. Clever or expert way of doing something. So what they have given these, ये tricks of trade और यहाँ पे a whole bag of tricks, ये आपको पहले एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, तभी मैंने यहाँ पे लिखा है. तो जब देखो ये रिपीट हुआ है, ठीक है, these two questions are repeated. When, so that's the reason कि अगर आप उसको practice करोगे ना, that's why I said कि whenever you practice such questions ना, you will be getting 1 or 2 questions from previous year. Easy, मतलब in a very easy form में you will get these. Okay. And it's very easy for you कि मतलब अगर आप यही सेम चीज को पढ़ जाओ ना, then it will be easy for you कि आप एक attempt कर लो. Okay, next go. With next we have deliver the goods. Do what is expected or promised. Deliver the good means do what is expected or promised. Deliver the goods में हम कि जो हमसे expect किया गया है या फिर जो promise किया गया है वैसा करना. Next is fine tooth comb. Examining something carefully to not miss out on any details. Examining something carefully. Fine tooth comb का मतलब कि हम किसी चीज को बहुत अच्छे से examine कर रहे हैं जिससे हम उसकी कोई भी detail को skip नहीं करें. Next is explore all avenues. Explore all avenues का मतलब है trying out every possibility to get a result. Explore all avenues मतलब you have to try out all the possibility to get a particular result. Next is fast track something. Fast track something means
rating something higher on your priority list to achieve the desired result. Fast track something means you have to rate something higher on your priority so that you can achieve what? You can achieve the desired result. अब देखो, these are all we have talked about. We have talked about acid test, cut the ground from under feet. Next is chase your tail, a whole bag of tricks. यहाँ पे आगे हमने पढ़ा get ducks in row, get the show on the road, keep your fingers on the pulse, mean business, think on your feet, sail through something, tricks of the trade. All these are what we have done. These deliver the goods, fine tooth comb, explore all avenues, fast track something. Okay. अब these are the ones जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है, ये आपको पहले एग्जाम में पूछ चुका है. When we will solve the question paper this week, the coming week, sorry, not this week, the coming week, when we will solve the question paper, I'll try to give a lot of questions from idioms and I'll mention all the previous year questions जहाँ से वो आए हैं. If it is 2016, I'll write it as 2016. If it is 17, I'll write as 2017. Okay. But we have to make sure prepare कर रहे हो, very first thing to mention that you have to solve at least 10 year papers. तो आपको idea होना ही चाहिए कि पिछले 10 साल का ट्रेंड क्या है क्वेश्चन पेपर का, because अगर वो ट्रेंड पता होगा then of course it's easy for you. ठीक है, तो we will be discussing that in our coming lectures. Now let's move forward to our questions. Okay, I have told you comprehension based questions आएंगे and direct question series आएंगे. I hope direct question series is clear. And comprehension based we will solve comprehension की फॉर्म में होगा. ऐसे ही यहाँ पे आपको, जैसे कि अभी यहाँ पे हमने बहुत सारे questions देखे, बहुत सारे idioms देखे जो किससे related है, जो कि कीपिंग कांस्टेंट मतलब एक रेगुलर फ्लो में रहने से रिलेटेड है. जैसे गेटिंग योर थिंग्स वेल ऑर्गेनाइज्ड है, गेट द शो ऑन द रोड है. ऑल दीज आर व्हाट? ऑल दीज आर कोई भी रिसेंट डेवलपमेंट से रिलेटेड आप में ये पूछ सकते हैं. कीप योर फिंगर ऑन द पल्स. ऑल दीज आर व्हाट? दे आर समहाउ लिंक्ड. ओके, तो अगर इस तरह से आपको कोई कंटेम्प्रेरी पैराग्राफ वो दे देगा, कंटेम्प्रेरी फर्स्ट जो कि पिछले कुछ टाइम से चल रहा है, ठीक है, पिछले कुछ टाइम में चल रहा है, तो कंटेम्प्रेरी पैराग्राफ कोई आपको दे देगा, वेदर इट विल बी अ न्यूज़पेपर क्लिपिंग, समटाइम्स दे गिव अ सैटारिकल फॉर्म, समटाइम इट्स इंफॉर्मेशनल या फिर समटाइम इट्स एनालिटिकल. उस बेसिस में आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है. स्टोरी फॉर्म में होगा तो आपको उसे एनालाइज करना होगा. नेक्स्ट थिंग दे गिव इज आपको इंफॉर्मेशनल फॉर्म दे देगा, जैसे कि कल हमने वो इकोसिस्टम वाला किया था, दैट वाज टोटली इंफॉर्मेशनल. फिर उसके बाद में आपको एनालिटिकल दे देगा, देयर विल बी डाटा, यू हैव टू एनालाइज दैट पर्टिकुलर डेटा. ओके, अब देखो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड आर दीज, डायरेक्ट क्वेश्चंस आर दीज. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द ओरिजिनल क्वेश्चंस एज इट स्टेट्स. सी, अब यहाँ पे क्या है, in the following question an idiomatic expression, एक idiomatic expression or a proverb is highlighted. एक idiomatic expression or proverb जो है it is highlighted, and now the next thing is you have to select the alternative which best describe its use. जो best describe क्या करता है, उसका use describe करता है. Okay, let me just make this marker thick so that it's easy to understand. So see, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपके पास में एक पर्टिकुलर वो दिया हुआ है, and the next thing you have to do is you have proverb highlighted है. वैसे एग्जाम में भी आपको ये highlighted मिलेगा, you don't have to find it. You get it in a highlighted form itself. Select the alternative जो best describe करता है उस sentence में, ठीक है, sentence में उसका use best describe करता है. Now let's see, it says I couldn't keep a track of everything he was saying. I couldn't keep a track of everything he was saying. वो जो भी बोल रहा था मैं हर चीज को नहीं समझ पाया, मैं हर चीज को नहीं उसका ट्रैक रख पाया. He talks a mile a minute. एक मिनट में वो एक माइल बोल देता है. तो यहाँ पे हमें पता है कि एक मिनट में वो एक माइल बोल देता है, तो बहुत सारा बोल देता है, तो बहुत जल्दी बोल देता है, ठीक है. अब boast too much, बहुत ज्यादा अपने आप को बढ़ा चढ़ा के बोलता है या फिर अपनी बहुत बड़ाई करता है. Boasting is not a part of this, so we will eliminate it. A complicated way, he talks in a complicated way, we can consider this complicated way में, तो इसलिए उसको समझ नहीं आया, that person couldn't keep track of everything. And all unrealistic things, he talks about all unrealistic things, पर वो सुन रहा है, ठीक है, he is not talking about unrealistic things. We can cancel this as well.
Now we are left in a complicated way and too fast. अब यहाँ पे क्या है, a mile a minute, a mile a minute, एक माइल एक मिनट में, ठीक है. तो मतलब it is related to what? Speed. Speed is related to what? Speed is related to fast. यहाँ से हम guess कर सकते हैं कि it is what? Too fast. So what did you have to do it? You have to write down a mile a minute और उसके बाद में आप उसका meaning लिख लेना. That is too fast. So answer number, option number 3 is correct. Let's move forward to our next part. I hope this is clear. Okay. Wait, let me just clear these. Okay. Next it says, I'm scared to go back with him as he is a road hog. I'm scared to go back with him. मैं उसके साथ जाने से डर रहा हूँ या डर रही हूँ. क्यों? Because that person is a road hog. अब what is the meaning of road hog? अब देखो road hog का मतलब क्या है कि वो person या तो thief है, burglar है, drunkard है या फिर rash driver है. अब road hog का मतलब आपको ये लग रहा है कि road से related है, तो road is linked, somewhat linked to what? Driving. तो वहां से आप ये कर सकते हो. So this will be rash driver, as that person is a rash driver. That's why this A person is scared to go with him. Okay. अब see guys, I have told you, you must be thinking कि ऐसे तो आप कोई भी आंसर बता सकते हो कि ये तो rash driver है, you must have read it, that's why you are doing this. But अगर हमने पढ़ा ही नहीं होगा तो हम कैसे attempt करेंगे? That is why I am saying कि वो जो link है ना, जैसे road है, इसको link करके देखो. अगर कहीं पे कोई ऐसा option दिख रहा है जिससे ये road या फिर ये hog कहीं पे link हो पा रहा है, ठीक है. अगर नहीं link हो पा रहा है, leave it. उसको सीधा का सीधा छोड़ो, आगे बढ़ो. If you can find a connection, if you can find something जो कि आपको लग रहा है कि हाँ, जैसे कि यहाँ पे माइल अ मिनट था, तो माइल इज डिस्टेंस अ मिनट, स्पीड से हम उसे लिंक कर सकते हैं, तो दैट इज फास्ट. फास्ट से हमने उसको लिंक कर दिया. रोड से हम ड्राइविंग को लिंक कर सकते हैं, तो रैश ड्राइवर हो गया. बट समटाइम्स यू विल फाइंड जहां पे आपको कोई रीजनेबल उसमें मतलब एक्सप्लेनेशन दिया ही नहीं होगा जो आपका इससे मिल जाए, ठीक है. So at that point of time, what you're going to do, you just leave it. Okay. Better leave it. Keep that in mind. Keep that in your mind as well. One thing you also don't have to like focus about. One thing you have to focus about is कि whenever now many times you attempt less questions, less number of questions which are correct. Most of them are correct. For example, if we have attempted 60 questions. And the cutoff is we are expecting it will be around 50 or 55, ठीक है. And this 60 में से we are getting 57 or 58 questions correct. ये उनके साथ होता है जो मतलब the one who have read well. But at point of time you feel like you get 57, 58. You're sure about ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा and these are correct, ठीक है. There are very less chances or slight chances of incorrect questions. But when you feel like यार I have just attempted 60 questions. मैंने तो idioms भी छोड़ दिया, मैंने comprehensions भी छोड़ दिया, मैंने one words भी छोड़ दिया, अब मैं क्या करूं, ठीक है. At that point of time, what you will do, just calm down your mind because this is enough. ये कम number लगता है कि 60 है तो कम है, but that's not how it works. आप क्या करोगे, आप उसको 80 तक ले जाओगे. You will mark all those questions which you are not so sure about, जिसमें आपको 3 या 4 पूरा ही क्वेश्चन नहीं आता, या फिर यू आर कंफ्यूज ऑन 3 or 4 ऑप्शंस, ठीक है. 3 ऑप्शंस में आप कंफ्यूज हो, आपको पूरा ही नहीं आता है. दिस इज द रीजन व्हाई वी गेट नेगेटिव मार्किंग. सो idioms में फॉलो द हार्ड एंड फास्ट रूल. इफ यू आर गेटिंग 4 to 5 करेक्ट, यू आर नोइंग कि आपको 4 से 5 तो यू नो कि हाँ भाई मैं इनको लेके थोड़ा सा श्योर हूँ, आई नो कि इससे कहीं ना कहीं लिंक करेगा एंड द मीनिंग इज सूटेबल एज वेल. Then it means you have done a very good job. Okay. Now let's move forward to our next question. So road hog का मतलब क्या है यहाँ पे? The answer is 4. It is rash driver. Now next is question number 3 is. Just give me a. Let me just clear it. Yeah. Question number 3 is. Our accountant has been fired as there was some monkey business with the books. Okay, as there was what? Some monkey business with the books. अब जैसे ये monkey business है, अब monkey business with the books, अब आपको इसमें ये हर option जो है ना
फर्स्ट थ्री ऑप्शन when even I have read this question, I felt like कि तीनों ऑप्शंस में से एक आंसर हो सकता है. Till the moment you don't know what's the meaning of this monkey business, okay? जब तक ये मंकी बिजनेस आपको समझ में नहीं आएगा, आपको पता नहीं है इसके बारे में, उस टाइम पे आपको भी ये लगेगा कि इन तीनों में से एक आंसर हो सकता है कि अकाउंटेंट को फायर कर दिया है. क्यों कर दिया है? कि या तो कोई स्टीलिंग एक्टिविटी होगी, वेरी फर्स्ट कॉमन थिंग जो हर किसी के दिमाग में आता है. मिस्चीवियस या फिर डिसीटफुल बिहेवियर होगा, या फिर कोई फनी एक्टिविटी होगी, मंकी बिजनेस से रिलेटेड हो सकती है, या फिर उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया है. ओके, तो ये चारों के चारों ऑप्शंस व्हाट दे सीम्ड करेक्ट. सो दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन आई वाज टॉकिंग अबाउट. If you know the exact meaning of monkey business, which is mischievous or deceitful behavior, if you feel you know this, then only take it. If not, leave it. Okay, because यहाँ पे stealing activity is also making sense, funny activity is also, displacement is also. Okay, there is some displacement with the books, there is some stealing activities, या फिर some mischievous या फिर deceitful behavior. ठीक है, so the correct answer is B. It is mischievous or deceitful behavior. I hope this is clear. See, why I am here is just to tell you what kind of questions can come from these topics. Now it's your duty to practice them, and if you have doubt, then we are always here. Okay, you can just post it down and we will reply on the same. Next is, the party has got out of hand and the guests started to throw bottles at each other. अब party क्या है? Party got out of hand and the guests started to throw bottles at each other. अब out of hand मतलब out of control हो गई, हाथ से बाहर चले जाना. ये हम अपने बेसिक हिंदी में भी यूज करते हैं कि हाँ, जैसे बेसिक in India it is said that this particular person of this family, वो तो हाथ से निकल गया है. ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, तो हाथ से निकल गया. सेम थिंग, इट इज आउट ऑफ कंट्रोल. ठीक है, तो यहाँ से सी इट इज इजी. दीज आर द इजी वंस. वो जो आपके 4 से 5 आई एम टॉकिंग अबाउट ना, दोस 4 to 5 idioms which you will find easy are these. Got out of hand. तो यहाँ पे क्या होगा? आंसर विल बी आउट ऑफ कंट्रोल. यहाँ पे स्ट्रेट अवे आप देख लो, आउट ऑफ कंट्रोल हमारा आंसर होगा. ठीक है, इट इज द इजी वन. इसको, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स वन मोर थिंग, व्हाट यू कैन डू, वन थिंग दैट कैन हेल्प, कि इफ यू हैव एनी इडियम एंड यू नो द हिंदी वर्जन ऑफ इट. ठीक है, जैसे कि तभी मैंने इसको बोला हाथ से निकल गया. हाथ से निकल गया मतलब कंट्रोल से बाहर चला गया. ठीक है, इफ यू नो दैट हिंदी वर्जन, आई हैव टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स, ये क्या है ना, सम ऑफ द स्टूडेंट्स जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको क्वालिफाइंग पेपर को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होता है, इट हेल्प्स देम अ लॉट. सो गाइज, इफ यू हैव अ हिंदी मीडियम या फिर जनरली हर कोई, मेक श्योर कि आप उसको एक बार ट्रांसलेट कर लो. ठीक है, ट्रांसलेशन में भी, फॉर एग्जाम्पल, इफ इट्स वेरी बैड, लाइक योर ग्रामेटिकल स्पेस इज नॉट दैट गुड, बट यू नो दैट वी हैव टू डू इंग्लिश इन बोथ prelims as well as mains. ठीक है, दोनों में करना ही है हमें तो. बट द थिंग इज ना, व्हेन यू ट्रांसलेट इट इनटू हिंदी, भले ही वो थोड़ा टूटा फूटा है, लाइक आपको एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता चल रहा है, इट विल गिव यू अ रफ आइडिया. ओके, सो द वन थिंग दैट यू कैन डू इज ट्रांसलेशन. एंड नेक्स्ट इज, जैसे यहाँ पे था आउट ऑफ हैंड, वैसे हो सकता है इनमें से एक आधा क्वेश्चन, दीज 4 to 5, 1 or 2, 1 question I can say, not 1 to 2, 1 question or 2 you will be getting like these, which is quite easy. Okay, नेक्स्ट इज, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5. अब कंपनीज कैश काउ इज द सेल्स डिपार्टमेंट. कंपनी की कैश काउ क्या है? सेल्स डिपार्टमेंट है. क्या है? कैश काउ. अब काउ का क्या काम है? काउ गिव्स अस व्हाट? मिल्क. अब यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? वो कैश काउ की बात कर रहा है, मतलब काउ दैट गिव्स कैश. तो सेल्स डिपार्टमेंट को ये कैश काउ से कंपेयर कर रहा है. किसको? सेल्स डिपार्टमेंट को कैश काउ से. अब कैश काउ का मतलब काउ दैट गिव्स कैश. तो सेल्स डिपार्टमेंट गिव्स व्हाट? कैश. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है विच मीन्स कि दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट इज अ इनकम का सोर्स. ठीक है, लेट्स सी. हैज द हाईएस्ट पेड एम्प्लॉयज. नो, इट्स इनकरेक्ट. इट इज लिंक्ड विद कैश, तो कुछ भी इनकम के रिलेटेड होगा. लीड्स टू लॉस ऑफ मनी. इट इज कैश जनरेटिंग काउ, नॉट लूजिंग मनी. ओके,
वो कैश लॉस करने वाली काउ नहीं है, इट इज जनरेशन वाली काउ. नेक्स्ट इज कंज्यूम मैक्सिमम कैश. As I said, cow gives milk, this cow gives cash. So consuming again, it is wrong. Dependable source of income. So we can depend cow के पे हम depend किस चीज के लिए कर सकते हैं? Milk के लिए कर सकते हैं. तो अगर हम इस cow पे cash के लिए depend कर रहे हैं, तो sales department क्या है हमारा? एक dependable source of income हो सकता है. तो option number D is correct. Okay. अच्छा, I have put only those questions which I was saying कि ये 4 to 5 आपको मिल जाएंगे. तो दीज आर माई फॉर्म ऑफ एक्सप्लेनिंग कि किस तरह के वो 4 to 5 क्वेश्चंस होंगे जो आप आराम से कर पाओगे. तो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे वो. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी. So what we did in today's lecture, we have talked about idioms, we have talked about phrases. Okay, we have talked about types of phrases, and we have talked about types of questions which are asked from idioms and phrases. ठीक है. फ्रेज और इडियम का डिफरेंस किया था हमने यहाँ पे. टर्म्स में क्या डिफरेंस है, लिटिल मीनिंग में क्या डिफरेंस है दोनों का. उसके बाद हमने पढ़ा था कि 4 टाइप्स के फेजेस कौन से होते हैं. नेक्स्ट वी हैव रेड अबाउट अलग अलग तरह के इडियम्स. ओके, all idioms are quite important, so please learn them properly. Okay, and जो previous year questions हमने किए उनमें भी. Next is we have read the comprehension. 2 टाइप के comprehension है हमारे पास. Questions है, sorry, comprehension based and direct question series. ठीक है. Comprehension में I have told you किस टाइप के questions आएंगे, and direct question series हमारी हमने भी की किस टाइप के direct questions आएंगे. ठीक है. एक statement wise questions आएंगे. Okay. I hope this is clear to everybody, and I'll meet you people tomorrow. Okay. Have a good day ahead, guys. If you have any